ராதே கிருஷ்ணா, ராதே கிருஷ்ணா, ராதே கிருஷ்ணா. காஷி, நீயும் என்றும் எனக்கு மஸ்தானியைப் போலவே பிரியமானவள். கிருஷ்ணரும் இதே பதில் தான் சொன்னாராம். என்றும் உங்கள் இருவரையும் நான் ஒப்பிட்டு பார்த்ததே இல்லை. விடுங்கள், எங்கள் இருவரையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கவும் முடியாது. ஏனென்றால் நான் உங்களுடன் ராசலீலை செய்யவில்லையே. உனக்கு என்னிடம் மஸ்தானியை பற்றி குறை கூற வேண்டும் என்று தோன்றுகிறதா? மற்றவர்களை பற்றி எதற்கு குறை கூற வேண்டும்? நமது காயமே நமக்கு அதிக வேதனை தரும். எனக்கு ஒரே ஒரு வேதனை தான் ஸ்ரீமந்த். நீங்கள் என் உயிரை கேட்டிருந்தாலும் கூட நான் மகிழ்ச்சியுடன் கொடுத்திருப்பேன். ஆனால் நீங்கள் என் கௌரவத்தையே பறித்துக் கொண்டீர்கள். சொல். நீங்கள் யாருடைய மனைவியோ அவர் எனக்கும் கணவர். இருக்கட்டும். ஆனால் எனக்கு தெரிந்த வரையிலும் மனைவி இருக்கும் போது கணவன் இன்னொரு பெண்ணை கூட்டி வந்தால் அவளை காதல் கிழத்தி என்று கூறுவார்கள். இந்த காதல் கிழத்தி என்பது புரியாத வார்த்தை. இதை வழக்கமாக எப்படி கூறுவார்கள்? அது சக்களத்தி. बाजीराव मस्तानी की मौत के बाद क्या हुआ उनके बेटे का? तो मुस्लिम बना या हिंदू मराठा? चलिए जानते हैं। पेशवा बाजीराव ने पहले अपने इस बेटे का नाम कृष्णा भट्ट रखा था, किंतु जब पूना के पुरोहितों ने इसका विरोध किया तो उसे एक मुस्लिम नाम दिया गया, शमशेर बहादुर। बाजीराव मस्तानी की मौत के बाद कई बार इसे मारने की कोशिश की गई। तब बाजीराव की पहली पत्नी काशीबाई ने शमशेर को अपने पास बुला लिया और अपने पुत्रों के साथ उसका लालन पालन किया। जब शमशेर बड़ा हुआ तो उसे बुंदेलखंड के बांदा और कालबी की जागीरें दे दी गईं। 1761 के पानीपत के युद्ध में जब सदाशिव समेत सभी बड़े योद्धा मारे जा चुके थे, तब शमशेर बहादुर ही था जो आखिरी तक अब्दाली की सेना को छकाता रहा। उसके पास केवल 5000 की घुड़सवार टुकड़ी थी, फिर भी वह बाजीराव पद्धति से दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहा था। बचपन में मिले तिरस्कार के बावजूद भी वह हमेशा मराठाओं के प्रति वफादार रहा। अंत में घायल शमशेर को राजा सूरजमल ने शरण दी और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। Does Islamic law oppress women? Myth number 5. Islam calls for Muslim men to oppress women with polygamy. The verse most cited to justify this myth is, again, taken out of both historical and literary context. They say it reads, "Marry women of your choice, 2 or 3 or 4. But there are a couple of problems with this reading. 1. Polygamy, or more accurately, polygyny, is a practice that was already prevalent in pre-Islamic Arabia. This verse was restricting and regulating that pre-Islamic practice from limitless wives to a max of 4. 2. This is only a tiny part of a single verse. Here's what's missing. The beginning. And if you fear that you will not deal justly with the orphans, then marry women of your choice. It was customary in pre-Islamic Arabia for male guardians to marry orphans in their custody with no regard for them. This verse put an end to the practice and ensured the protection of orphan girls at risk of abuse. And here's the end of the verse. But if you fear that you shall not be able to deal with them justly, then only one, or that which your right hands possess, that will be more suitable to prevent you from doing injustice. This verse commands men to deal with their wives justly, and then verse 129 in the same chapter reveals that men will never be able to be equal between wives, even if they strive to do so. The objectives of this misconstrued verse are clear. 1. Ensure fairness and protection for women. And 2. Regulate the practice of polygyny by removing the potential avenues of abuse to ensure justice for women in the historical context they lived in. If that intent for fairness is not met, then Islamic law discourages or prohibits polygyny entirely. Still, images of angry, polygamous Middle Eastern men have long been a stereotyped trope used to demean Islam. But do they hold any truth? Let's look at some statistics. Polygamy is actually not exclusive to Islam or even a predominantly Muslim practice. One study found that only 5.7% of India's Muslims
were polygamous compared to 15.25% of Adivasis. Hindus, Buddhists, and Jains also all had higher polygamy rates than Muslims. What do Uganda, Zambia, the Central African Republic, the Republic of Congo, Iran, and Jordan have in common? Polygamy is legal in these countries. But the predominantly Christian nations practice polygamy at significantly higher rates than the predominantly Muslim countries, like 31.9% of the Republic of Congo compared to 3.8% of Jordan and less than 1% of Iran. And although polygamy is not legal in the US, a 2014 study found that we have 9.8 million people in polyamorous relationships. In certain regions of sub-Saharan Africa, the predominance of polygyny has actually been linked to the historical transatlantic slave trade. Polygyny is a practice that predates Islam. It's not strongly associated with any religion, but it varies geographically and historically based on culture. So, Islam did not introduce polygyny, but it did restrict it, with noble goals in order to ensure fair treatment of women.